Hello everyone, assalamu alaikum. Hope you're doing good. Let's see. Okay, this is working fine. Good. How are you? Happy Saturday. Happy Saturday everyone. Da-da-da. And there we go. How is it going? How is it going for you folks? Are you ready for some Angular work? Let's probably bring this here maybe. Da-da-da. Uh-uh. And let's bring this guy here. Happy Saturday, South. I just got free from my one of my classes, and now I'm thinking before I go to bed, I should probably do some work. Should probably work on one more recipe. So we'll see. Hey Arshad, how it's going? Let's also open mouse highlight. Always good to have that one. And we got the Angular cookbook as well. So yeah, I think this stream would be just like the other ones. We're gonna have some interesting challenges. um this is not going to be a tutorial, so if you want a tutorial, no, not gonna be one. So we are just going to work through some Angular application and yeah, just see how it goes in the end. So the idea for me is to work on this recipe, um the recipe from my book, and we are slowly moving forward to chapter 3 now. So we're going to be working on this recipe that is providing different services against the same DI token. Arshad, I'm good. How are you? Wa alaikum salam. So yes, I think I did some of it, but the fun part is I have to still implement the application itself. So right now there's nothing here, but we want something here. So we're going to implement things one by one, but we are going to implement with the new code. So we have admin, auth, but let's see, components, login. So how do we want to do this? I think we can implement. So we have admin, which has a module. We have auth, which is a module. Employee has a module. We have some guards, interfaces, services, and then we have a shared. I think we would be working with a lot of standalone components in here. I think. Let's do that. Let's do that. So we're going to start with creating some standalone components in Angular. Chapter 3, Aliased class providers. Let's quickly add that one. And then we are going to say ng generate component or nx, npx nx generate component. It's going to be called admin. It's going to be standalone, and then the project is supposed to be what? Npx nggc admin standalone project. I think we should be good. Oh, I should be running this into start. Cd start. And there we go. So we should get a new, when running the Angular CLI outside the work. Oh, npx nxg. Now we're creating it. Awesome. So now we should have a new component called admin. Yay! Standalone true. Yay! So we got the admin component. We also have auth, employee, and bucket. So let's create those.
We're gonna create one for auth. We're gonna create one for employee. And then we are going to create one for bucket. This is one of the reasons why I absolutely love NX, because it makes it so easy for me to create all those components. Like I don't have to create the files or anything. So it's really nice to do so. All right, so now that we've got a couple of components, let's see how the original application was working before. So if I go to Angular Cookbook, and if I go to CD chapter 3, start here, ng aliased, I would have to do I have to do npm install? I think I do. Npm I and ng npx ng serve port 4000. So yeah, let's wait while this one runs. In the meantime, we are going to start copying the code. So in the app component, we only have the router. So I need to put a router outlet here. Oh, what did I just do? Oh, I think I made it full screen. Let's go back. So this was router, outlet, save. Then if we have a look at the routing module, this is the configuration that we have. We have like auth, admin, employee. So 3 routes. So we're going to go to app routes. Here we're going to define all those components. So let's quickly copy this, paste it here, and now we are going to fix them. How do we fix them? Well, for auth, I should say auth component, and then this should be auth component, but then this should be load component. Yes, load component, load component. This one has to be admin.component, admin component, employee.component, employee component. उर्दू में गाइड कर दें आज स्ट्रीम में क्या करने लगे हैं। आज स्ट्रीम में हम जो है वो मेरी बुक पे काम कर रहे हैं, तो इसमें कोई ट्यूटोरियल नहीं है। वी आर नॉट गोइंग थ्रू एनी ट्यूटोरियल, या हम कोई नई चीज़ नहीं देख रहे होंगे। तो इट्स मोस्टली गोइंग टू बी मी आंसरिंग क्वेश्चंस। तो अगर आपके कोई सवालात हों, आप वो सवाल पूछ सकते हो और मैं उसके जवाब दे रहा हूँ। लेकिन मैं बजाय इसके कि मैं अकेले काम कर रहा हूँ, मैं इसको स्ट्रीम कर रहा हूँ, ताकि अगर किसी को कुछ लर्निंग करनी हो एंगुलर की तो वो कर सकता है। लेकिन ये कोई फुल फैज ट्यूटोरियल नहीं है कि एंगुलर में किस तरीके से क्या काम करना है। तो मैं कुछ इसमें सिखा नहीं रहा। आई एम जस्ट गोइंग टू कोड। अगर आप देखना चाहते हो आप देखो, अगर आप नहीं देखना चाहते नहीं देखो। अगर आपको सवालात पूछने हैं तो सवालात पूछो, नहीं पूछने नहीं पूछो। आई होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन। ओके, अब हम जो है वो ऑथ के अंदर थोड़े से गार्ड्स भी बना लेते हैं। तो ये हमारे पास, अच्छा गार्ड्स के लिए we need something new. So I think with Angular's new version we have a different way of working with guards. So Angular functional guards, functional router in Angular. So in this one, injectable of type blah blah blah. We'll see what they say. Can activate blah blah blah. Add an admin feature module blah blah blah. Where do we have the guards? Ng generate guard. Nahi. Let's see guards.
तो ये रहे guards. Guard के अंदर we have, okay, we just have a function, and then we have service, router, blah blah blah. I think सही है. So I'm going to create a guard now. So nx npx nxg guard. We're going to name that auth guard. ठीक है. और ये होना चाहिए nx generate guard, और इसको हम कहेंगे auth guard, और हम कहेंगे कि जो प्रोजेक्ट है वो है ng aliased class provider. VS Code theme name, it's called winter is coming, और ये है जॉन पापा का. So if I go to theme, color theme, this is called winter is coming. Dark blue, no italics. So I don't like italics. So winter is coming by John Papa. Which interfaces would you like to implement? I think if we look at the interfaces, I think it's just a can activate. And yeah, that should be it. Can activate. Come on. Okay, let's see. Okay, now if I go ahead to source app auth, we should have a guard as well. Do we have a guard here? NGLS provider source app. Oh, it created it here. Let's move them inside auth. Yes, please. Routes. Did we have to define it here? No, we did not. Cool. So now I can go ahead and say, hey, auth guard please. ठीक है, ये हमारे पास import हो गया. Really good. Now I can check what this guard looks like. So it still looks like a class. Okay. So we don't have a functional guard in NX. कोई बात नहीं, खैर हो गई. Then we can just use this code, return true, next state. URL tree, blah blah blah. सही है. तो I think the only thing that's remaining is the constructor. So we can do auth equals inject auth service. We don't have a service yet, right? Do we have a service? Where should the service be? In here. So we do have a bucket service here. Okay, let's do that. तो हम ये करते हैं कि we'll just copy services from here, और यहाँ से we'll copy to here, and then here I can say auth service. There we go. So now that we have that, we also need router. So router equals inject router from Angular, and I think we should be good. We're not using route or state in here in the guard, are we? No, we're not. So maybe we can remove these from here. Sir, sometimes you speak English in your videos, sometimes you speak Hindi. I think you need to make two separate channels, one English and one Hindi. It's very difficult for me to maintain both of them. So I don't really know if I should make two different just because of languages. So I'm not sure. If you understand English, then I think you should be able to understand English. If you understand Urdu, you should be able to understand Urdu, right? And mostly I also mention the languages. So if it's not explicitly mentioned that this is Urdu, then yeah, it's English. So I hope that makes sense. It's easier for me to work with one channel and not having to maintain a lot of channels, if that makes sense. Remove the constructor from here. Oh, now we also need interfaces. So interfaces. And do we have anything else? Okay. So we have got guards, interfaces, services. We do have a shared module, but I think we'll cover that in the bucket component. That's fine.
We also have constants, user type, and I think now we should be good. App component CSS. I would rather go ahead and slide or put the styles on the HTML. ठीक हो गया. All right. So now if I have a look at my app component, this is how it looks. Good. And if I go all the way down, what does it look like? Just router outlet, very good. CSS just has that, that's fine. Component. Oh, this is, do not use the code below in production. It will cause performance issues. Yes, that's true. So let's quickly put that one in app component. Component here. Pa pa pa. Pa pa pa. Okay, now we do const. No, not const. Auth equals inject auth service. Let's also import this. Let's remove this. Router equals inject router. Let's remove this constructor from here. Import this one. I think now it looks good. So now if I go back to my application, string null is not type. Yeah, because we have issues in auth service, of course. So let's see, auth service is this one. Okay, so now the login user type could be string or could be null. So let's say string and null. Oh, what are we doing? No, it should be string or null. We got that one. Okay. What other errors do we have? No errors. Yay, auth works. So if I'm logged in, तो ये automatically चला जाता है on auth, which is good. Now let's have a look at bucket. This is bucket. iFruit is not a never. Okay. So bucket source should be of type iFruit. So this should be fruit, something like this. And now we have all the errors gone. Yay. Okay, so how does the auth component look like? We have login in the HTML. Let's have a look. Login. Yeah. Now we have to also copy the code for TypeScript. So here we have constructor, blah, blah, blah. ng on init, login as employee. So auth.component. Here we need two things, auth and routing. So auth equals to inject auth service. Route equals to inject router. Router. Let's quickly import it. Now we got ng on init. So let's also make this implements on init. Okay. This should also be router module. User type, let's import it from there. Router. User type equals navigate to user route. So here we're gonna say, all right, if we have a user type, okay, so this can never be. Now this is going to be interesting. This should always be a string. And this should probably be a employee by default. And now from the local storage get item, says string null not assignable to type string. So maybe we could do something like this, string, and
So if we don't have this, which means this should be nullish coercing. So we have that there. And then if we log out, no, this doesn't seem good. So string null, null. Then if we do this, I think we should still be good. Yes. Now let's see. I have to save this file as well. And what is the user type? So the user type here, navigate to route. So here we can say if not user type return. User type is supposed to be user type. Oh, okay, got it. So then the problem is shouldn't it be then this user type? So we assign it there, save it. Do we still have issues? No, it compiles. Okay, so now we got these buttons: login as admin, log as an employee. I'm a bit sleepy, but we'll see. So login with admin takes us to admin. Back. Can I go back, please? No. Do we have any error? So if we go to here, oh, because now we are logged in. Okay. Let's also see what's happening on 4000. Ooh, nothing. Why does it fail? Hash algorithm, blah, blah, blah. Oh, okay. Okay. All right, we can leave it for now. So the app component here in header should also have, this spacer and logout button. So let's add that to our files. I'm going to go to app component HTML, add the spacer right here. And then we have the logout button. So if I now see there is a logout button, yay, log out, yay, goes out. Refresh, works. If I try to go login, does not, login as employee. Yay, refresh. Okay, I think we're good. Sir, your 8 hours long video learn Mansek Wali बहुत help की उसने. I've learned a lot from that video. Just wanted to thanks for your valuable content. Thank you, Aliased. Highly appreciate it. Do make sure कि इसको share करो to with others. Also let them know. Or you can always tag me on Facebook या LinkedIn wherever you're posting it. तो आप post करके मुझे tag कर सकते हो. That would be really nice. Thank you. I highly appreciate it. अच्छा जी, ऑथ के अंदर हम एक काम ये भी कर लेते हैं यार कि ये बटन तो हमने इम्प्लीमेंट कर दिए हैं. आई थिंक कि इन क्लासेस की ज़रूरत नहीं है. अगर मैं इसको देखूं तो ये इस तरीके से आ रहा है, बेहतरीन. और मैं यहाँ जाके दे सकता हूँ डिस्प्ले नहीं, फ्लेक्स और आइटम्स सेंटर जस्टिफाई अराउंड. ठीक है. अच्छा, अब एक और काम ये करते हैं कि गैप दे देते हैं 4.
और ये हमारे पास आ गया गैप। बेहतरीन। अच्छा, अब हम ये करते हैं कि हम जाते हैं अपने हेडर पे, क्योंकि हेडर के अंदर जो बटन आ रहा है ये अजीब सा आ रहा है, इट शुड नॉट बी लाइक दिस। तो ज़रा देखते हैं क्या हो रहा है यहाँ पे। बटन हो रहा है, बटन लाइट हो रहा है। आई एम गोना रिमूव दिस। ठीक है, और अगर लॉग्ड इन है ये तो नज़र आ रहा होगा, और हम इसे लॉग आउट कह रहे होंगे। लॉग आउट बटन। हम्म हम्म। अच्छा, ये वाइट में क्यों आ रहा है ये क्लियर नहीं है मुझे। अगर मैं इसको लॉग आउट करता हूँ, अच्छा तो ये भी बाय डिफ़ॉल्ट वाइट में ही है, और टेक्स्ट जो है वो ब्लैक कलर का आ रहा है। ओके, तो यहाँ पे भी आना चाहिए, ऐसे ही नहीं। लेट्स हैव अ लुक कि ये चेंज क्या कर रहा है। अब्दुलरहमान कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम सर जी, कैसे हैं आप, कौन सा प्रोजेक्ट कर रहे हैं। अब्दुलरहमान, मैं जो हूँ वो अपनी बुक के 3rd चैप्टर पे काम कर रहा हूँ, जिसमें हमें ये करना है कि एक बकेट का व्यू बनाना है, जिसके अंदर हेडर होगा, लॉग आउट का बटन होगा, आप लॉग इन कर सकते हैं होम एडमिन पेज से, और फिर उसके बाद कुछ साइंसेस हमें लगानी है ये देखने के लिए कि हम एक ही सर्विस को अलग अलग जगहों पे अलग अलग नाम के साथ कैसे कॉल कर सकते हैं। तो मैं इस वक्त यही काम कर रहा हूँ कि इस तरह का जो आउटपुट है वो अभी हम लेकर आ रहे होंगे इंशाल्लाह। So this is how the button looks. The text is white, the button is white, that's the problem. So what does this really do? So a button that we have here, if I go here, how does this one look? This is also button, and the type is button, button hover, webkit appearance none, background color transparent. I think it's because we are giving it type button, I'm not really sure. But should be okay, but if I remove the type, then how does this look? Still looks like it should work. So the background color, this one is not being applied. Hover not disabled, this one is being applied. Background color, background color. Okay, makes sense. So we click this. So let's do this. Button is going to be of type equals to button. And now if I click here, we have the button here. If I give this the button light, then we don't have any. Oh, we do have a lot of button lights. No, not on this one. But button light पाइट हमसे पाइट करेगा. I think button primary is a style that we have here. We also have button danger, but let's also add one more for button light. So button light is going to have text wide. No, text, not text wide, but BG. BG wide. And then I can take the purple here. Text purple 700. Hover BG purple. Hover text white. ओके, अब देखते हैं क्या आता है. ओके, दैट डिड नॉट वर्क क्योंकि हमने बटन लाइट की क्लास हटा दी थी इस पे से. आई थिंक यस. क्लास लॉग आउट बटन, क्लास बटन लाइट. ये हुई ना बात. अब सही नज़र आ रही है.
ऐसा कल मैंने मैसेज किया था कोडिंग कंपटीशन के हवाले से, इमरान अली, मैंने उसका रिप्लाई भी किया था। आई थिंक यू डिड नॉट सी द रिप्लाई। तो यहाँ पे हम करेंगे MX4, ये गैप में आ गया, ज़बरदस्त। नाउ आई कैन डू लॉग आउट, लॉग इन। मे बी जब हम कलर इसका कर रहे हों तो होवर BG पर्पल चेंज हो जाए, आई डोंट नो, मे बी 700 हो जाए। सही है ना? आई थिंक दिस लुक्स ओके, बट द टेक्स्ट इज अ बिट वियर्ड, बट आई थिंक इट्स गुड। सो लॉग आउट करते हैं, लॉग इन एज एम्प्लॉय, लॉग इन एज एडमिन, लॉग आउट। गुड हो गया। अब ज़रा बात करते हैं कि जब हम लॉग इन हो जाते हैं तो हम जाते हैं एडमिन पे। ठीक हो गया। तो अगर मैं अपनी पुरानी बुक का कंटेंट देखूं तो मेरे पास चैप्टर के अंदर एडमिन पे आ रहा होता है बकेट। तो हमें बकेट इस्तेमाल करना है। हम चैट जीपीटी से सजेशन पूछ सकते हैं ऐप्स की। कंपटीशन का मतलब जो है वो मुझे नहीं क्लियर हो रहा कि कंपटीशन जो है उसमें क्या हम किसी चीज़ को चेक कर रहे होंगे कि किसने क्या बनाया है, या हम बस एक सॉर्ट ऑफ टाइम्ड एक्टिविटी कर रहे हैं जिसमें हम कोई प्रोजेक्ट बना रहे हैं। तो मुझे ये कन्फ्यूजन है। तो मुझे ज़रा बताओ कि क्या आपके माइंड में है क्या। कंपोनेंट में बकेट है, इस बकेट को उठा लेते हैं और इस बकेट को ले जाते हैं हम हमारे बकेट कंपोनेंट में। ठीक है। फिर CSS, इसकी CSS भी है कुछ भाई, वो भी कॉपी कर लेते हैं और टाइपस्क्रिप्ट भी कॉपी कर लेते हैं। अच्छा, हाँ ये मसला होगा। तो ये जो हमने किया हुआ है ना, ये आई थिंक सिर्फ एक एक बाहर जाके कॉन्स्टेंट्स मिल जाने चाहिए। यस, तो इंस्टेड ऑफ डूइंग दिस वी कैन डू डॉट डॉट स्लैश। सही है। तो ये तो हो गया बकेट। अब बात करते हैं बकेट सर्विस की। बकेट सर्विस को भी देख लेंगे, लेकिन ये बकेट क्यों रो रहा है? हैज़ नो इनिशियलाइजर, और कंस्ट्रक्टर में भी इसको हमने कुछ नहीं बताया हुआ। अच्छा जी। एक काम करते हैं, सबसे पहले तो ये बकेट सर्विस उठाते हैं। इंजेक्ट बकेट सर्विस, इसको हटा देते हैं। सर एक इनपुट बनाए और बटन के क्लिक के बाद पेज रीलोड करने के बाद भी इनपुट में वैल्यू रहे, ये कैसे करें? बॉगी बॉगी ऑफिशियल। ये आप ऐसे करेंगे कि अगर आप पेज रिफ़्रेश कर लेते हैं तो यू हैव टू स्टोर एवरीथिंग इन ए स्टोरेज, यानी कि आपको ये काम करना है कि एप्लीकेशन के अलावा ब्राउज़र के अंदर ये चीज़ सेव रहे। तो आप जो है वो लोकल स्टोरेज इस्तेमाल कर सकते हो। तो आप कोई भी लोकल स्टोरेज के अंदर चीज़ डालते हो तो वो वापस मिल जाती है। ठीक है। तो अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप एक पेज पे हो और मैं इस पेज पे हूँ और मैं जाके अपनी जावास्क्रिप्ट के अंदर लिख लूँ लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम, और लेट्स से मैं यहाँ कहता हूँ काउंटर और मैं कहता हूँ 1, तो ये चीज़ सेव हो जाएगी हमारी एप्लीकेशन के अंदर लोकल स्टोरेज में यहाँ पे। ठीक है। अगर मैं इसको यहाँ पे एंटर करूँ, ऊप्स, क्या मैंने कुछ मिस किया है? ठीक है। अब अगर मैं जाके यहाँ पे एप्लीकेशन पे जाऊँ तो ये आ गया काउंटर और इसकी वैल्यू आ गई 1। ठीक है। अब अगर मैं इस पेज को रिफ़्रेश कर दूँ मल्टीपल टाइम्स तो भी मेरे पास एप्लीकेशन के अंदर काउंटर जो पड़ा हुआ है। तो जब मुझे ये चाहिए होगा तो मैं कह सकता हूँ लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम काउंटर, और मेरे पास जो वैल्यू है वो वापस आ गई। ठीक है। तो इस तरीके से आप लोकल स्टोरेज जो है उसको इस्तेमाल कर सकते हो। आई होप दैट मेक सेंस। अच्छा, जो लोग इसको यूट्यूब पे देख रहे हैं तो प्लीज़ इसको क्लिप कर लीजिएगा। तो आपके पास एक क्लिप का ऑप्शन आ रहा होगा, तो उसको क्लिप कर लेंगे तो दिस कैन बी देन सेव्ड। ओके, सही है। अब बात करते हैं कि हम अपनी बकेट का क्या करें। बकेट का हमने HTML डाल दिया, CSS इस्तेमाल कर ली और कंपोनेंट फाइल भी डाल दी, राइट। अच्छा, अब ये यहाँ पे कुछ मसले मसाइल कर रहा है। क्या मसले कह रहा है? कि हमारे पास फ्रूट जो है ना,
वो जा रहा हो अच्छा सिलेक्टेड फ्रूट में। ओके सिलेक्टेड फ्रूट। ओके सही है, एनजी मॉडल के अंदर ये चीज़ जाती है और वैल्यू अगर एम्प्टी है तो फिर वो वहाँ पे आएगा। ओके सही है। इस पे क्यों कंपेयर कर रहे हैं मे बी। यस और selected fruit null is not assignable to type. Wait a second. टाइम एक्टिविटी पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ आइडिया प्रॉब्लम को लेकर जिसमें फिर हर किसी की स्किल है कौन क्या क्या फीचर डाल सकता है। ओके आई थिंक इसको मैं सोचता हूँ थोड़ा सा और कि इस पे क्या चीज़ हो सकती है, क्योंकि इंटरेस्टिंग तो है लेकिन इसको हम इन दी एंड कैसे इवेल्युएट करेंगे वो क्वेश्चन है। तो देखता हूँ, मैं देखता हूँ इसको। ठीक है अच्छा, मैं जो हूँ इस बकेट का कोई इनिशलाइज़र नहीं है, तो इसको अभी हम यहीं रखते हैं, या हम इसको ये भी कह सकते हैं इक्वल्स दिस डॉट बकेट सर्विस डॉट बकेट। ठीक है तो ये भी काम हो सकता है। अच्छा ऑन इनिट में हम ये काम कर रहे हैं तो इसको यहाँ से हटा देते हैं, लोड आइटम्स भी कर लेते हैं। और अब यहाँ पे ये मसला कर रहा है तो हमें जो बकेट कंपोनेंट है इसको हमें असल में स्टैंड अलोन रखना चाहिए था। आई डोंट नो कि हमने क्यों नहीं रखा हुआ। तो स्टैंड अलोन ट्रू हो जाएगा और हम कहेंगे इंपोर्ट्स कॉमन मॉड्यूल, साथ ही साथ जो है हम कहेंगे फॉर्म्स मॉड्यूल। ठीक है जब हम ये कर लेते हैं तो यहाँ वाला एरर गायब हो गया। अब हम ऐप बकेट इस्तेमाल कर सकते हैं अपने एडमिन पेज में। तो एडमिन पे जाते हैं और यहाँ पे हम कहते हैं ऐप बकेट। अच्छा ऐप बकेट को, इस बकेट को एडमिन में इस्तेमाल करने के लिए एडमिन जो स्टैंड अलोन है इसमें मुझे जो है वो बकेट कंपोनेंट भी चाहिए होगा। तो अब मेरे पास ये ऐप बकेट इस्तेमाल हो सकता है। तो उसको सेव करते हैं, जाके देखते हैं ऐप पे, ये बकेट शॉपिंग कार्ट चूज ऐड टू बकेट। सही है तो ये इतना हमने कर लिया है कि व्यू वाइज कुछ मुनासिब हो गया है। अच्छा लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है, एक प्रॉब्लम ये है कि ये स्टाइल बहुत अजीब सा हुआ है और उसका रीज़न क्या ये है कि हम बूटस्ट्रैप यूज़ कर रहे हैं कई जगहों पे आई थिंक। हम्म इवेल्युएट हम इस तरह कर सकते हैं कि हम 1 से 2 मिनट की स्क्रीन रिकॉर्डेड वीडियो सबमिट करने का कहें, फिर जिसकी यूआई और फीचर ज़्यादा अट्रैक्टिव लगेंगे उसका फिर कोड रिव्यू कर लेंगे। हम्म लाइक जैसे अभी गूगल कंपटीशन करवा रहा है, कर सकते हैं इसको। मैं थोड़ा सा सोचता हूँ क्योंकि इट टेक्स टाइम रिव्यू वगैरह करने के अंदर। इसको अगर हम ग्रुप लेवल की एक्टिविटी करवा लेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा, जिसमें ग्रुप एक दूसरे के कोड रिव्यू कर सकता है। लेकिन इसको मैं थोड़ा सा डिस्कस करता हूँ और यस आप भी मुझे अगर आइडियाज़ आ रहे हो तो फेसबुक पे सेंड कर सकते हो, तो नॉट अ प्रॉब्लम। ठीक है अच्छा इनपुट ग्रुप, हाँ मेरे ख्याल से मैंने जो स्टाइल्स रिमूव कर दिए ना ये उसकी वजह से हुआ है। लेकिन अब जो बकेट इटसेल्फ है वो तो मेरे पास इसके अंदर पहले से मौजूद है। तो अगर मैं चला जाऊँ स्टार्ट पे चैप्टर 1, आई थिंक ये था एनजी ऑन चेंजेस में, आई थिंक आई एम नॉट रियली श्योर, लेट्स सी। नहीं लेट्स सी
भाई आपने वो व्लॉग डालना क्यों मन कर दिया? कौन सा व्लॉग? कौन से व्लॉग की बात कर रहे हो? यार मेरा डिस्कॉर्ड पे पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, अपडेट की मैंने, इसको रिजॉल्व करता हूँ, फिर हम वहाँ इसको ज़्यादा प्रोडक्टिव कर सकते हैं। सही है, साउंड्स गुड टू मी। ज़बरदस्त। यार बकेट कहाँ पे थी? ये कौन सा है? एन जी मल्टीपल स्ट्रक्चर डायग्राम, एग्जैक्टली ये वाला। तो यार इसको इस्तेमाल करते हैं ना। इसमें हमने फ्रूट्स और ऐड सेक्शन। अच्छा चलो, इसको पहले क्लोज अदर्स कर लेते हैं। और हमारे पास है चैप्टर 3 के अंदर, चैप्टर 3 या ये रहा हमारे पास है। अच्छा ये फाइनल में है, सॉरी। चैप्टर 3 में हमारे पास यहाँ पे है हमारा कोड। तो हम ये करते हैं कि बकेट के अंदर जो एस सी एस एस है इसको थोड़ा सा ऐड कर लेते हैं, फ्रूट्स। अब इसकी जो एच टी एम एल है उसको भी देख लेते हैं क्या किया हुआ है इन्होंने। ऐड सेक्शन है और पेज सेक्शन है, ओके लेट्स सी। गुड हो गया, ज़बरदस्त। तो अगर मैं जाके बकेट कंपोनेंट सी एस में देखूँ और नई जगह जाके ये पेस्ट कर दूँ, तो अब ये कह रहा है कि बकेट डज नॉट एग्जिस्ट ऑन टाइप बकेट कंपोनेंट, डिड यू मीन बकेट। और ये कहाँ से आ रहा है हमारे पास? यार मेरा डिस्कॉर्ड पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, अपडेट की है, मैं आज इसको रिजॉल्व करता हूँ, फिर हम वहाँ से ज़्यादा प्रोडक्टिव करते हैं। सही है, साउंड्स गुड, ऑसम, साउंड्स गुड टू मी। यहाँ पे हम कह सकते हैं आई थिंक कि एन जी इफ बकेट डॉलर ए सिंक पाइप, तो ये बकेट आ गया। ओके डॉलर बकेट बनाया हुआ है इन्होंने, डॉलर ए सिंक एज बकेट। Fahad कह रहे हैं, can I use Angular 5 in my new project? Is it stable to use? It will face issues. Please reply. Fahad Khan. Fahad, Angular 5 या Angular का जो भी लेटेस्ट वर्जन होता है ना वो स्टेबल ही होता है, वो टेस्टेड होता है। और गूगल के अंदर बहुत सारे प्रोडक्ट्स जो है वो उस पर काम कर रहे हैं, यानी कि बहुत सारे प्रोडक्ट्स एंगुलर पे चलते हैं। तो ये सारा का सारा वहाँ से टेस्ट होके आता है। तो आप जो है वो मेरे ख्याल से बगैर किसी प्रॉब्लम के ईजीली यूज़ कर सकते हो उसको, मुझे ऐसा लगता है। ऑसम, आई थिंक ये वाली बकेट थोड़ी सी ज़्यादा बेहतर लग रही है कंपेयर टू दी अदर वन। अगर मैं इसको ओपन करूँ, डा डा डा, क्लोज, यस, ओके सही है। तो हमारे पास सिलेक्टेड फ्रूट आ गया। हम हम एक काम ये करके देखना चाहेंगे कि ये कैसा दिखता था। एन जी मल्टी स्ट्रक्चर डायरेक्टर, एन पी एम स्टार्ट, एन नहीं एन पी एम रन सर्व, एन जी मल्टी स्ट्रक्चर डायरेक्टिव्स। लेट्स सी। छो जाऊंगा मैं अभी जाके, नींद आ रही है। आई विल गो एंड स्लीप in a bit. Okay, so this is what it was looking like. If I add stuff, okay, so this is how it should look. Cool, cool, cool. Then I think we don't have a problem. तो सही है, सेम काम वहाँ पे भी हो रहा था। सर प्लीज़ मुझे समझाइएगा कि मुझे फ्रंट एंड डेवलपमेंट बनने के लिए कितना टाइम लगेगा। 4 घंटे और 5 मिनट, इतना टाइम लगेगा। ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं, इससे कम नहीं।
अब अगर मैं मजाक से हट के बात करूं तो फ्रंट एंड डेवलपर बनने के लिए जो टाइम लगता है वो आप पे है। आप ज़्यादा टाइम लगाओगे, आप ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे तो ज़्यादा जल्दी ज़्यादा चीज़ें कवर करोगे, कम प्रैक्टिस करोगे तो ज़्यादा टाइम लगेगा। तो आप पे है ये, इसका कोई एक आंसर नहीं है, 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने। तो आपकी मर्ज़ी है, आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा जल्दी हो जाओगे। आई होप दैट आंसर द क्वेश्चन। तो इस सवाल का जो है वो कोई कोई कॉन्क्रीट जवाब नहीं आ सकता कभी भी कि 3 महीने, 4 महीने। ये आप पर है, आप कितना टाइम देते हैं, कितना टाइम देते हैं, क्या चीज़ लर्न कर रहे हैं उस टाइम को देते हुए। तो इन सारी चीज़ों पे ये चीज़ मैटर करती है। अच्छा, बकेट जो है वो 6 मंथ काफ़ी है। आप पे है, आप 6 महीने अगर एक ही चीज़ सीख रहे हो और बेकार चीज़ें या बेकार ट्यूटोरियल फॉलो कर रहे हो तो 6 महीने में नहीं हो पाएगा ना। मैं यही तो कह रहा हूँ, 6 महीने का मतलब क्या है, 6 महीने में आप सीख क्या रहे हो, किस किन ट्यूटोरियल को फॉलो कर रहे हो, कितनी एप्लीकेशंस बना रहे हो, इन सारी चीज़ों पे होता है। काफ़ी कभी भी नहीं होता। फ्रंट एंड डेवलपर जो है वो सालों काम करते हैं। ये 6 महीने, 6 महीने की लिमिट क्यों है ये समझ से बाहर है मेरी। मतलब क्या करना है 6 महीने बाद, क्या हो जाएगा, गांव से बाहर चले जाओगे, शहर छोड़ के जाना है, क्या करना है 6 महीने बाद। जो लर्निंग है, सीखना, वो चलता रहता है, वो कभी रुकता नहीं है। तो फ्रंट एंड डेवलपमेंट जो है वो उसके अंदर हज़ारों लाखों चीज़ें हैं सीखने के लिए। 6 महीने में आप एक स्पेसिफिक चीज़, जितनी आपने मेहनत की है वो आपने सीख लिया, उतना हो जाएगा। लेकिन काफ़ी का क्या मतलब है, किस चीज़ के लिए काफ़ी चाहिए। तो सवाल जो है वो बहुत वेग है ये, कि क्या 6 महीने में मैं ये हो जाऊंगा या वो हो जाऊंगा। इसका कोई कोई कॉन्क्रीट आंसर नहीं हो सकता। तो आप पे है, आप जितना 6 महीने के अंदर लर्न करेंगे, जितनी ज़्यादा आप मेहनत करेंगे, आप उतने बेहतर हो जाएंगे। लेकिन ये काफ़ी वाली चीज़ जो है वो कहीं कहीं नहीं आती कि काफ़ी है या नहीं है। इट डिपेंड्स। अगर आपको लगता है आप 6 महीने में बहुत अच्छे हो गए हो तो ये आपके लिए काफ़ी है, बहुत अच्छी बात है। लाइफ पे नहीं समझ आया मुझे। बॉगी बॉगी ऑफिशियल, लाइफ पे बैठने के लिए सर, व्हाट डू यू मीन लाइफ पे बैठने के लिए। प्रोजेक्ट लाइव करने के लिए बोल रहे हो या लाइव प्रोजेक्ट्स पे काम करने के लिए बोल रहे हो। आप 6 महीने के अंदर अगर आप ढंग से बैठ के HTML CSS की बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे तो आप खुद से HTML CSS की एप्लीकेशन बना सकते हो। उस चीज़ के लिए मे भी काफ़ी है। लेकिन फ्रंट एंड डेवलपर जो है वो सिर्फ HTML CSS नहीं कर रहा होता, वो बहुत सारी और चीज़ें कर रहा होता है। तो अपना 6 महीने का गोल फिल वक्त सिर्फ ये रखो कि आपको जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वो समझ आ जाए, और फिर आप मज़ीद प्रोजेक्ट्स बनाओ। लाइव प्रोजेक्ट, अगेन वही वही बात है, लाइव प्रोजेक्ट पे बेतहाशा और चीज़ें होती हैं। उस पर कौन सा फ्रेमवर्क इस्तेमाल हो रहा है, रिएक्ट इस्तेमाल हो रहा है, एंगुलर इस्तेमाल हो रहा है, फ्रंट एंड है, बैक एंड है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो इतना आगे की सोचने की ज़रूरत नहीं है। अभी फिल वक्त आप जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं उस पर मेहनत करो, उस पर काम करो कि वो सही हो जाए। बाकी बात की फिर बाद में देखी जाएगी। ठीक है, आई होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन। सिलेक्टेड मॉडल फ्रूट। अच्छा, अब इसी को हम एम्प्लॉय में भी ले आते हैं। अभी हमारा एम्प्लॉय जो है वो खाली पड़ा हुआ है, एम्प्लॉय वर्क्स, इट सेज दिस वन। सो इंस्टेड ऑफ दैट, if we go ahead and import bucket component here, then I can go ahead and say something like app bucket bucket। दूसरी फाइल भी सेव करनी है, ये अब हमारे पास एम्प्लॉय पे भी आ गया, ये एडमिन पे भी आ रहा है, एम्प्लॉय पे भी आ रहा है। गुड हो गया। मुझे एंगुलर आता है सर, बट जावास्क्रिप्ट में प्रॉब्लम होती है लॉजिक के अंदर। तो लॉजिक पे मेहनत करो, जिस चीज़ में प्रॉब्लम हो रही है उस पर मेहनत करो मज़ीद, उस पर मज़ीद प्रैक्टिस करो, मज़ीद ट्यूटोरियल्स फॉलो करो, मज़ीद प्रॉब्लम सॉल्विंग की एक्सरसाइजेस करो। जिस चीज़ में आपको प्रॉब्लम हो रही है उस चीज़ पे ज़्यादा टाइम लगाने की ज़रूरत है। ओके, आई होप दैट मेक्स सेंस। ओके, चलो सही है, ये काम तो हो गया कि हमने हमने एक इनिशियल एप्लीकेशन बना लिया। आई थिंक आई विल स्टॉप राइट हियर। नींद आ रही है मुझे क्योंकि मैं 3 बजे से उठा हुआ हूँ। आई वॉज
आई वोक अप अर्ली क्योंकि आई नीडेड टू टेक अ क्लास, और 3 बजे से अब क्या टाइम हो गया है, 9 बज गए, तो आई हैव बीन अप फॉर 5 आवर्स, तो आई एम गोना गो स्लीप नाउ. तो थैंक यू एवरीबडी हु जॉइंड, आई हाईली अप्रिशिएटेड. और आज का दिन भी बड़ा थोड़ा मज़े का है. आई थिंक आज धूप निकली है बहुत देर से बाद स्वीडन में, तो आई विल लुक एट इट. और आप लोग अपना ख्याल रखें, टेक केयर योर सेल्फ, एंड वी आर प्रॉब्ली गोना डू another stream जिसमें हम यहीं से फिर कंटिन्यू कर लेंगे wherever we are right now. So thank you and have a good one. Allah Hafiz. You too.